Good morning, children. Show that Newton's second law of motion in the real law of motion. This is a very important question. In this question, you have to prove that Newton's second law contain first law as well as third law of motion. That's why Newton's second law is called real law of motion. So you have to prove this. Firstly, we will write the first law is contained in the second law. It means second law contain first law. So firstly, we have to write the expression for second law of motion, that is equal to F is equal to ma. When external force is 0, then F is equal to 0. So in the absence of any external force, F is equal to 0. So F is denoted by ma. So ma is equal to 0. But m never equal to 0 because m is the mass, that is constant. So m can never be 0. So here we will write the m is not equal to 0, but a can be 0. So a in the short we can write a is equal to क्या होता है? V minus u upon t is equal to 0. So here we will write the v is equal to u. In this case you can see here initial velocity is the final velocity. जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे सो स्पीड कैन नॉट बी चेंज because it is the effect of force can be change the velocity as well as speed of the object. Thus there is no acceleration when no force is applied, that is in the absence of any external force. A body at rest will remain at rest, and a body in uniform motion will continue to move uniformly along the same straight path. This is nothing but first law of motion. Now in the second case we have to prove second law of motion is contained third law of motion. So again we will consider F is equal to ma. Here consider an isolated system of two bodies A and B. Suppose the two bodies A and B interact mutually with one another. According to Newton's second law, F is equal to ma and F is directly proportional to dp upon dt. When force exerted by A on B, it is denoted by FBA because A is exerted on A. Force exerted by A object on B. If you have write force exerted by B on A, so you will write FAB. अगर B A पे लगाएगा तो हम यहाँ FAB लिखेंगे, अगर A B पे लगाएगा तो FBA लिखेंगे. इज इक्वल टू A B पे फोर्स लगा रहा है, सो मोमेंटम विल चेंज ऑफ B ऑब्जेक्ट. सो हियर वी विल राइट dpb अपॉन dt. यहाँ पे ऑब्जेक्ट A ऑब्जेक्ट B पे फोर्स लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट B का मोमेंटम चेंज होगा. So we will write here F vector BA is equal to dpb upon dt. So force exerted by B on A is denoted by FAB is equal to dp upon dt. And when we will add the equation 1 and 2, so finally we get this expression FBA plus FAB is equal to d upon dt in bracket PB plus PA. So in the absence of any external force, total force is 0 because external force is not present here. So force is equal to 0. So finally this term is also equal to 0. In this case FBA is equal to minus FAB. So here we will write action equal to their opposite reaction. It is Newton's third law of motion. That's why we can say that Newton's second law is a real law of motion. So here we will write the note as both first and third laws of motion are contained in the second law. We can say that Newton's second law is the real law of motion. And this is a very important question. State the law of conservation of linear momentum and derive it from Newton's second law. Same question आता है second, state the law of conservation of linear momentum, but you have to derive this from the Newton's third law. तो आपको Newton's third law से उसको प्रूफ करना ये आपका होमवर्क है. बट हियर आई विल डिराइव दिस फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ. दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ सेवरल interacting particles, the total linear momentum of the system is conserved. The total linear momentum is the vector sum of the linear momentum of all the particles of the system. ये क्या बोल रहे हैं? आप सिंपल नहीं सकते हो.
सिंपल वे में, ठीक है। क्या लिखोगे आप इसमें? टोटल लीनियर मोमेंटम इज द वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। क्या बोल रहे हैं? एक मैटर का टोटल लीनियर मोमेंटम उसके इंडिविजुअल पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के सम के इक्वल होता है। नाउ we will derive this. Consider an isolated system, the system on which no external force acts of an particles. Consider an isolated system, the system on which no external force acts of an particles. क्या बोले? एक सिस्टम हम कंसिडर करेंगे जिस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. सपोज द n particles have masses m1, m2, m3 and so on up to mn and are moving with velocities v1, v2, v3 up to vn respectively. Then total linear momentum of the system is P is equal to P1 plus P2 plus P3A and up to Pn. So here P1 is the M1 V1, P2 is the M2 V2, P3 is the M3 V3 and Pn is the Mn Vn. If F is the external force acting on the system, the according to Newton's second law, it will be F is equal to dp upon dt. यहाँ पता है बच्चों, force is equal to dp upon dt. So here in the absence of external force, F is equal to 0. So dp upon dt is equal to 0. So here we can write P is equal to constant because P1 P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6 up to Pn is equal to constant. So here we can write in the absence of any external force, the total linear momentum of the system is a constant. Okay. This is the law of conservation of linear momentum. Is it clear, children? Okay. So here next question is, what are concurrent force? Obtain the condition for the equilibrium of three concurrent forces. So here equilibrium of concurrent forces, forces acting at the same point on a body are called concurrent force. क्या बोल रहे हैं? किसी भी एक बॉडी के एक ही पॉइंट में सेम पॉइंट पे बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्स. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? सो यहाँ पे आपको लिखा है टॉपिक क्या? इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस. व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एट द सेम पॉइंट एंड द नेट अनबैलेंस्ड फोर्स. वो यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है, वहाँ पे F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स, बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन वो सब अनबैलेंस फोर्स है, नॉट अ बैलेंस फोर्स. सबका अगर रिजल्टेंट जीरो है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस. द बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line and is said to be in equilibrium. Consider three concurrent forces F1, F2 and F3 acting at the same point O. ठीक है, O of a body A as shown in figure. This is the figure A, figure B. It is in a parallelogram form. This is the F1 vector, this is F2 vector, and this is the make a side of parallelogram. So here we will apply the laws of vector laws of parallelogram. So their resultant is given by the diagonal of a parallelogram. So here diagonal of this side is F1 plus F2. Resultant of F1 and F2 is equal to F1 plus F2. If the third force F3 act on the body such that in this direction, so here F1 plus F2 is equal to the F3, but it is in opposite direction. So here we will use the minus sign for opposite direction, but it is in equilibrium condition. So here it is represented by this. So F1 plus F2 plus F3 is equal to 0 because this is a concurrent force, but it is in equilibrium. So total sum of these unbalanced forces is equal to the 0. As shown in figure B, these three forces in equilibrium can be represented by the third side of the triangle. So as shown in figure B, these three forces in equilibrium can be represented by the sides of a triangle taken in the same order. Thus, a condition for the equilibrium of a number of forces acting at the same point is that the vector sum of all these forces is equal to 0. आपको पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करो या ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो, कोई भी लॉ अप्लाई करो, सभी फोर्सेस का सम इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज इक्वल टू 0. Such forces can be represented by the sides of closed n-side polygon taken in the same order. Is it clear, children? Two masses, this is an important question also.
When two masses capital M and small m are connected at the two ends of an inextensible string, the string passes over a smooth frictionless pulley. Calculate the acceleration n of the masses and the tension in the string given by the m is greater than small m. So here you can see the diagram. This is the pulley and these two objects are connected to each other through this string. Here capital M is the mass of this object and small m is the mass of this object. Okay, but here capital M is greater than small m. So here question is here, two masses capital M and small m are connected at the two ends of an inextensible string. The string passes over a smooth frictionless pulley. Calculate the acceleration n of the masses and the tension in the string given capital M is greater than small m. So here n is nothing. So you will not write the n words. So here correction is calculate the acceleration of the masses and the tension in the string. Here given is capital M is greater than small m. So here main topic is connected motion. Let small a be the acceleration with which the heavier mass capital M moves downwards and lighter mass small m moves upward. Let T be the tension in the string. According to Newton's second law, the resultant downward force on the mass capital M is, ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसका मास ग्रेटर है, इसका मास स्मॉल है, तो ऑब्वियसली ये नीचे आएगा, जिसका मास ज़्यादा होगा वो नीचे की तरफ ज़्यादा स्पीड से मोशन करेगा, तो इसका जो वेट होगा ग्रेटर होगा, कैपिटल एम जी इज ग्रेटर देन स्मॉल एम जी. आपको पता है वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इज ऑल्सो फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी कैपिटल एम, बट यहाँ पे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई हो, दैट इज कॉल्ड एम जी. सो वेट इज इक्वल टू एम जी. और जस्ट स्ट्रिंग में जब कोई चीज़ को हम खींचते हैं, रस्सी तन जाती है, तो यहाँ पर टेंशन लगेगा, और डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑल्सो फोर्स, so it is a vector quantity and direction of this tension is always towards the connected point of connected. ठीक है, सिंपल में आप ये समझो, कोई भी अगर रस्सी या स्ट्रिंग बंधा हो किसी ऑब्जेक्ट से, अगर आपको टेंशन उस किसी भी रस्सी में निकालना है, किसी भी स्ट्रिंग में, आप वहाँ पे एक, मेरे हिसाब से वहाँ पे आप अम्ब्रेला को इमेजिन कर लो. अम्ब्रेला ऐसा होता है, ठीक है, जहाँ जिस भी आपको स्ट्रिंग में अम्ब्रेला, जिस भी स्ट्रिंग में आपको किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ टेंशन निकालना है, आप वहाँ पे रस्सी में बैठ जाओ और एक अम्ब्रेला ओपन कर लो. अम्ब्रेला का जो पीक पॉइंट है जिस डायरेक्शन में, वहाँ पे होगा टेंशन. अगर यहाँ पे निकालना टेंशन, इस तरफ अम्ब्रेला को इमेजिन कर लो. बट इफ स्ट्रिंग्स आर सेम देन टेंशन इज ऑल्सो सेम. इफ स्ट्रिंग्स आर चेंज देन टेंशन इज ऑल्सो चेंज. यहाँ एक ही रस्सी यूज हो रही है, दैट्स वाई इट कंटेन ओनली टी, दैट इज सेम टेंशन. अगर यहाँ रस्सी चेंज होती है तो हम T1 और T2 लेते हैं. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? ओके, सो हियर mg इट इज T, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. अब ऑब्जेक्ट पुल्ली के थ्रू यहाँ नीचे ही आएगा, इसका मतलब क्या है, mg T से ग्रेटर है, सो mg माइनस T करेंगे हम, mg minus T, and that is equal to total force, and that is ma. So resultant upward force on small mass m is ma is equal to T minus mg. अब T पहले क्यों लिखे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, मतलब mg ज़्यादा बड़ा है कैपिटल T से. यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, इट मीन्स T is more effective than the mg, it means T is greater than mg. So here we will write ma is equal to T minus mg. यहाँ पे रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स लेंगे, यहाँ पे रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स. यहाँ पे रिजल्टेंट डाउनवर्ड क्या होगा, कैपिटल एम ए. यहाँ पे रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स क्या होगा, स्मॉल एम ए. एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी विल गेट कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए. यहाँ से आप ए कॉमन लोगे तो ये ऐसा हो जाएगा. ये क्या था, एम जी माइनस टी, यहाँ पे क्या टी माइनस एम जी, टी से टी कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या बचा, एम जी माइनस
स्मॉल एम जी, फिर जी कॉमन लेंगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, एम कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. ऑब्वियसली ए इज ग्रेटर देन जी, that is the acceleration a of the two connected bodies is less than the acceleration due to gravity. यहाँ पे देखो a की वैल्यू g से छोटी होगी. क्यों छोटी होगी, क्योंकि आप देखिए यहाँ सम, अगर हम कोई भी दो नंबर को प्लस करते हो माइनस करते हैं तो ऑब्वियसली प्लस वाला टर्म जो है वो बड़ा आता है. तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में जो है वो लार्ज वैल्यू है, और किसी भी डिनोमिनेटर में अगर लार्ज वैल्यू है उसके न्यूमरेटर की कंडीशन में, तो वैल्यू जिसकी फाइंड करते हैं वो मिनिमाइज हो जाती है. एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे हम लेते हैं कैपिटल एम इज इक्वल टू 5, स्मॉल एम 2. ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, ये आएगा, ऊपर लिखेंगे 5 माइनस 2, लीजिए 5 प्लस 2 इंटू जी, क्या बचेगा 3 अपॉन 7, 3g अपॉन 7. अब मैं 3 को 7 से डिवाइड करूँ, ऑब्वियसली ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा. इट मीन्स a इज लेस देन g. सो हियर a विल बी smaller than the g. So here a is less than g. The acceleration a of the two connected bodies is less than the acceleration due to gravity. It is an important point. When dividing equation 1 by equation 2, so capital ma upon small ma and mg minus t upon t minus mg. So here a to a cancel to each other. So we will get capital M upon small m इज इक्वल टू एम जी माइनस टी अपॉन टी माइनस एम जी. फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा. फिर यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है. कैपिटल एम टी स्मॉल एम टी दोनों को एक साइड कर लेंगे, सो इट विल बी एम टी माइनस एम टी प्लस एम टी हो जाएगा. टी कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या होगा, दोनों सेम क्वांटिटी है, प्लस होकर 2 कैपिटल एम स्मॉल एम जी मिलेगा. ठीक है, निकालना है आपको वैल्यू, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड टेंशन. फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टेंशन इज 2m mg अपॉन m प्लस m. दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टेंशन. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.